Hello guys, in the last lecture we studied about back cross and test cross. In this lecture we will be dealing with Mendel's laws of inheritance. These are the three Mendel's laws of inheritance: law of dominance or first law of inheritance, then we have law of segregation or second law of inheritance, and we have law of independent assortment or third law of inheritance. These two law of dominance and law of segregation, ये आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पर जाके पहले मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस देखिए एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दीज लॉज वेरी इजीली. वी हैव सीन दिस एक्सपेरिमेंट अर्लियर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पर हम टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कर रहे हैं एंड वी गेट दिस हाइब्रिड टॉल एज F1 जनरेशन. So in this case, what does law of dominance states? Law of dominance हमें क्या बताता है? जो अलेल F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, that allele is the dominant allele, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, that is your recessive allele. Clear? The allele which is able to express itself in the F1 generation is called as the dominant allele, while the one which is not able to express itself is called as the recessive allele. This was your first law of inheritance. Your second law, which is law of segregation, what does it states? Usually ये जो हमारे gametes हैं वो organism में साथ में ही रहते हैं. You can see here capital T, here small t and small t, without mixing actually. साथ में रहते हैं but mix नहीं होते. At the time of gamete formation they separate, अलग अलग हो जाते हैं. This is your law of segregation, and because the gametes are pure, this law is also called as law of purity of gametes. So next is law of independent assortment. ये दोनों लॉ के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट फॉर दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको डाईहाइब्रिड या फिर ट्राईहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाना होगा. वी हैव ऑलरेडी डन दिस डाईहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पर हम टॉल एंड येलो प्लांट को क्रॉस कर रहे हैं विद ड्वार्फ एंड ग्रीन. यू गेट हाइब्रिड टॉल एंड येलो प्लांट. व्हेन यू आर डूइंग सेल्फिंग, व्हेन मेंडल डिड सेल्फिंग इन दिस प्लांट्स, ही सॉ दैट ही रिसीव्ड 9 प्लांट्स. मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से मार्किंग किया है, which you can see. So tall and yellow plants he got 9 plants like that. Then he had dwarf and green plant, one which I had tick mark over here, one dwarf and green plant. But at the same time उसे दो नए characters भी दिखे, tall and green, which were 3 in number. I had drawn circle over here in this case, and he also received dwarf and yellow, which I have made a cross over here, 1, 2 and 3. So यहाँ पर उसको दो ऐसे और एक्स्ट्रा प्लांट्स मिले जिसमें जो कैरेक्टर्स है वो फ्यूज हो चुके थे. सो हियर we can say that law of independent assortment states that one character is independent of the other character. This dominant T may go with either this Y or this Y. Similarly, this recessive T as well can go with capital Y or small y. In the next lecture, we'll be dealing with deviations from the Mendel's law in detail. Thank you.